would be same. Yes, we just have to solve, right? For first case, d is equal to what? 60 into t, and for second it will be 2.5 plus d is equal to what? Tell me. Ut, which is 70t minus half 80 square, right? So I guess all of you can solve linear equation in. Tell me. So just substitute the value of t over d over here. Then you will have a quadratic equation, and you have to solve for value of t. Can you do that? Tell me. Right? So this is clear. है ना? समझ में आ रहा है ना? Right? Okay. Now 36, I guess 36 you can solve now. 36 जैसा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया गया था, that this should be dimensionless, right? So dimension of A should be equal to what? Tell me. 1 by t, because it should be dimensionless. The dimension of A should be 1 by t, and here, right, this should be L. Yes, this should be L because the dimension should be same. ये distance है तो ये भी distance होना चाहिए. So V0 by A should be L. ना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि ओके ए सॉरी ए दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, V0 का डायमेंशन चाहिए, ए का डायमेंशन निकल गया ना, ए का डायमेंशन निकल गया तो V0 डायमेंशन निकल जाएगा. V0 is equal to L into A, and A is 1 by T. So I guess V0 is V0 velocity only, है ना, right? Okay, so the answer is simple, right? L to the power minus 1 and T to the power minus 1. 37. Now 37, I guess 37 is super easy. Ninth type. Tell me what is the answer of 37? What is the meaning of displacement? Area under the graph. Very good, है ना? Area under the graph, right? ठीक है, right? So it will be positive and it will be negative because total distance नहीं पूछा गया है, displacement पूछा गया है. Yes or no? यहाँ पे कुछ लोग गलत ये कर सकते हैं कि इसको ऐड कर देंगे, है ना, तो वो गलत हो जाएगा, राइट? वो क्या हो जाएगा? वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना. हाँ या ना? टेल मी. वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा. Okay, so this is also done. Next, 38. 38. A stone is allowed to fall from top of the 100-meter high tower. At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with velocity 25 meters per second. The two walls will meet after. Now, ये देखो, ये शायद बहुत लोगों ने गलत किया होगा, ये काफी लोगों ने गलत किया होगा. बट देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टोन इधर से गिर रहा है और एक स्टोन ऊपर थ्रो किया गया है. They will meet at some point, yes or no? Yes or no? Tell me. Right? They will meet at some point. Okay. Now, when you talk about this, don't you think that the distance covered by this stone, stone A, plus distance covered by stone B should be equal to this only? That's the first thing. Like, let us see what information I can deduce from the problem, है ना? Right? Okay. Now, second information. Yes, second information. Now, when it is dropped, right, this is allowed to fall. It is a dropping, right? Suppose this distance is x. So what will be this distance? Tell me, what will be this distance? Total is 100. So if this is x, this is 100 minus x. Right? Yes. So time taken by A and B should be same. Agree. The time taken by A and B should be same. Okay. Yes. So if time taken by A and B is same, so I can say that x is equal to ut plus half at squared. U is 0.
So it will be half g t square, right? This is first equation, enough. And in this case, 100 minus x is equal to what? Ut, which is 25t minus half gt square. Yes or no? Tell me. Hi, Anna. Samprita, think about it, right? Both are meeting at the same point, na? Right? If both are meeting at the same point, then don't you think the time should be same? Think about it. यहाँ से यहाँ गिरने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया ना, तभी तो मीट कर रहा है, राइट? एग्री? समझ में आ रहा है ये? सो नाउ यू कैन सॉल्व x का वैल्यू ये जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? हाँ या ना? All if you getting this, right? कोई दिक्कत इसमें? ओके, यस, सो t सॉल्व हो जाएगा. Now 39. The focal length of the mirror is given by this, where u and v represents object in its distance. Then tell me, क्या होगा आंसर? Super easy, super easy. What is the answer of this? Tell me, what is the answer of this? Everyone. Tell me, क्या होगा इसका आंसर? बताओ. The statement is f to the power minus 1 is equal to u to the power minus 1 plus v to the power minus 1. Yes or no? That is the statement. F to the power minus 1 is equal to u to the power minus v to the power minus 1 plus u to the power minus 1. Right? So tell me, what would be the answer? Correct, right? Yes, है ना? So if you rearrange it, think about it. If you rearrange it, I guess all of you know this, है ना? F will be equal to what? Take LCM, right? Solve it, should be u into v by u plus v. Yes or no? Ayana. Very good. This will be the statement. Agree? Agree? And doubt? So ये तुम्हारा तीन statement हो गया ना? U into v. So I can say that delta f by f is equal to, now इसके लिए क्या हो गया? Delta u by u plus delta v by v, right? है ना? और फिर ये नीचे है, so plus ये whole एक term हो गया. So delta u plus v by u plus v, and we know that we will always have plus, है ना? Right? Relative के लिए, maximum relative के लिए we will have always plus. So clear हो गया ये D? Everyone? Okay? चलो, very good. Now 40 was easy, right? 40 is easy, है ना? हाँ है ना? Just have to differentiate, right? 40 is easy, yes. Tell me, what is the answer of 40? B, है ना? Right? Because for velocity, differentiate once, right? Then make it equal to 0, or just put t is equal to 0, right? And for acceleration, again differentiate. So the answer would be B. Now 41, tell me, 41 also easy? Hi Anna. Tell me. 41. What is x? X का equation क्या है? X is equal to t plus 1 का whole square? Yes or no? X is equal to t plus 1 का whole square? Right? Then we know that when you talk about what? Velocity, है ना?
So velocity is dx by dt. You just have to check that dx by dt, right, is what is the equation of dx by dt, है ना? हाँ है ना? Okay. चलो. So the answer would be what? 41 का आंसर क्या होगा? A, right? Because see, it will be what? T plus 1 का whole square. So if you differentiate t plus 1 का whole square, you will get what? 2t plus 2, है ना? Right? So I guess all of you know what is the graph of 2t plus 2. The graph of 2t plus 2 will be what? Straight line, na? Okay. Right, right. Now, when you talk about question number 42, 42 is super easy. How many of you know this? 42 was super easy. We have done exactly similar kind of problem in class. Hayana, area is what? Side square, right? Hayana, side square. Then we will take what? We will take the error, है using significant figures, right? We will take the error using significant figures. Okay. So yes. So the answer would be what? Tell me, the answer would be what? A. 42 ka A. Right? Yes or no? Okay. Now 53 to 55. How many of you remember that 55 we have done in classroom? 55 we have done in classroom. How many of you remember this? Raise your hand. Classroom में क्या हुआ है? Example, मैंने यही example से समझाया ही था, ऐसा ही example समझाया था, right? हाँ, sorry, 45, not 55, right? 45. I guess when we studied this concept, right? This was the first example that I took, है ना? How many of you remember this? Raise your hand. Right? So what we did, we just first step was what? Find the dimension of A, B, and D, है ना? And dimension of F. The dimension of F is ML to the ML T to the minus 2. This should be equal to dimension of A. A is area, which is L square to the power A. Then velocity, L T to the power minus 1 to the power B. And D is density. Density is mass by volume. So M L to the power minus 3 to the power C. Right? Then we just have to do what? Equate, है ना? We will get three variables, three equations, right? And we will solve it. I guess all of you related, है ना? All of you can do it. Okay. Now 43, 44. Can you solve 43, 44? Any doubt? Anyone have any doubt in 43, 44? 43, anyone have? 44 is easy, I guess. 44, right? 43, 44. Anyone have any doubt? Please ask. 43, okay. 43, you might have doubt. Okay, chalo. So a balloon is rising vertically upward at a velocity of 10 meters per second, right? A balloon, right, is rising upward, right? 10 meters per second. When it is at the height of 45 meters from the ground, right? 45 meters from the ground. Okay. Just imagine that this is 45. Right? A parachutist bail out from it means jump from the balloon. Okay. Right? Jump from the balloon. Right? Okay. So tell me, if someone jumps out of the balloon, what will be his initial velocity? Tell me, everyone. That is the first concept. If someone jumps out of the balloon, what would be the initial velocity? Dhruv, yahi to dikkat hai na, right? 10, exactly, Suhan, correct. 10 meters per second. 10 meters per second. Upar ki or. Inertia, yes or no? Tell me, inertia. Remember, right? That when body is in rest, it will continue to be in rest. If a body is in motion, it will continue to be in motion unless and until external force is applied.
है ना, right? So even if it jumps, right, the initial velocity will be this only, 10 meter per second only. Yes or no? Agree? सबको first concept समझ में आ गया? Everyone got this first concept? हाँ या ना? Hey guys, something happened. Okay. Now, I guess this first concept is clear, right? Now, what is the second concept? Tell me, what is the second concept? U पता चल गया? So U is equal to plus 10. That is the concept. That is the only concept. और कुछ नहीं है. बस यही concept था. अब U पता है, acceleration पता है. What is acceleration? Tell me, what is acceleration? Minus 10. And time is given as 3. So can you solve? Tell me, can you solve? S is equal to ut plus half et square. Okay. So 43 is clear. Everyone, 43 is clear. चलो next 40. हाँ 44 भी हो जाएगा. 44 में से दिक्कत है पूछ लो. Anyone have any doubt in 44? Tell me. Doubt तो पूछ लो 44 में. No doubt. Anyone 44? शर्माओ मत, पूछ लो. Okay. किसी को भी इसमें आप पूछ लो. Stone is thrown vertically upward, attains maximum height of 45 meters. I guess all of you can see, है ना? यहाँ से यहाँ तक गया, maximum height attained किया. So this distance is given as 45. This is 45, right? So we know that at maximum height, what will be V? V will become 0, yes or no? Right? Yes or no? So V is 0. U नहीं पता. U नहीं पता. U तो निकालना है. Right? A पता है. Which is 10 minus obviously. And S pata hai, which is 45. So can you find U first? Step 1. Can you find U first? भाई पहले तो U चाहिए ना. U निकल जाएगा ना. U कैसे निकलेगा? U कैसे निकलेगा बताओ. थर्ड इक्वेशन मोशन से U निकलेगा. U square, right? U square is equal to 2as B square minus U square is equal to 2as, right? यहाँ पे मैंने क्या किया? Actually it will be minus 2s, but A क्या होगा? Negative है ना, तो मैंने directly 2 लिख दिया, right? समझ में आ रहा है ना. A का वैल्यू निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया. So U square is equal to 2 into 10 into 45. I guess all of you can solve it now. So it is 900. So U is equal to 30 meter per second. Agree? अब तुमको U दे दिया है, V दे दिया है, right? U दे दिया है, which is 30. V बोल दिया है, which is half of this, which is 15. A पता है, which is minus 10. Right? Can't you find time? Tell me. Can you find time? आया ना? Easy है. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो. Okay. Very good. चलो. Next. So 45 तो कोई डाउट नहीं है. 45 तक कोई भी डाउट नहीं है. सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हमने. Now 50 तक देखो. 50 तक. 50 तक. Because all the problems are in module. हाँ या ना? Tell me. How many of you like can feel now, right? कि जितने भी सवाल थे सब मॉड्यूल टाइप हैं. नीट वाले स्टूडेंट्स, जेई वाले स्टूडेंट्स, सबके लिए. मतलब बहुत डिफिकल्ट था क्या? 15 प्रॉब्लम में से कौन सा प्रॉब्लम था जो बहुत डिफिकल्ट लगा किसी को भी? Because I have discussed each and every problem, right? Don't you think that most of the problem was easier than, actually the module 1?
टेल मी। राइट, है ना। सो वही मैं बोल रहा हूँ, तुमको ना रिवीजन करना है, रिवीजन करना, बेसिक्स जो क्लास में हो रहा है ना उसको बस करते रहना है। सो देखो 15 में से अगर तुम 12 भी सही करते, राइट, 12 भी सही करते तो कितने मार्क्स आते हैं? 48 मार्क्स से फिजिक्स में आते हैं अब तक, जबकि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम बचा ही हुआ है ना। एंड सी नीट के प्रॉब्लम्स जो है ना, नीट के एग्जाम टेस्ट के प्रॉब्लम्स इससे ज्यादा इजी थे, नीट वाले क्वेश्चंस इससे ज्यादा इजी थे। हाँ या ना, टेल मी, नीट स्टूडेंट्स थे कि नहीं थे? राइट, है ना अंकित। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, राइट, यू विल गेट इट। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर जो इजी इजी प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो गलत मत करो ना। 48, 46, 46 हो जाएगा आई गेस, यस और नो? 46 हो जाएगा, राइट ना? 46 आई गेस हो जाएगा नहीं, बिकॉज 46 इज सुपर इजी। नहीं संपदा, राइट, अगेन क्वेश्चन सेम नहीं होता, बिकॉज जेई में तुम लोग को 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, नीट में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, इस वीक वाला सेम था, इस वीक में ना, इस वीक में एक फिजिक्स का एक अलग एमटी दिया हुआ था, वो सेम था। एनीवेज आई विल डिस्कस नीट वाला भी, इसमें तुम लोग जेई वाले भी रहोगे, राइट, दोनों डिस्कस होगा। बिकॉज सी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस बाय द वे, द ओनली डिफरेंस इज कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है नीट वाले में, बाकी सेम होता है, राइट अंकित, संजना, है कि नहीं? और केमिस्ट्री तो डिट्टो सेम है, केमिस्ट्री डिट्टो सेम है, केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन नीट और जेई इज, जेई में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, नीट में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो जो बोलता है कि नीट और जेई अलग अलग है, झूठ बोलता है। और अभी ना लास्ट 2 साल से आई विल टेल यू, जेई इतना ज्यादा लेवल गिरा दिया है ना अपना, कि जेई का लेवल नीट के लेवल क्वेश्चन से इजी हो गया है, ठीक है। जेई का लेवल नीट के लेवल से इजी हो गया है पिछले 2 साल से, बिकॉज ऑफ दिस 4 times 5, लाइक सो मेनी पेपर्स। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत, हाँ जैन, सीईटी जैसा क्वेश्चन आता है, सीईटी जैसा, बट अगेन पीपल मेक मिस्टेक्स, राइट, रिवीजन नहीं करते ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यूनिट एंड डायमेंशन का जैसा क्वेश्चन तुमने डिस्कस किया ना अभी, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आया है जेई में, ओके। Now tell me, if two vectors are perpendicular, if two vectors will be perpendicular, right? Tell me, क्या करते हैं बताओ? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ना संप्रीता, डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, यस और नो? बिकॉज cos 90 is equal to zero, right? cos 90 is equal to zero, so डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमेशा, है ना? so we know dot product this dot this क्या होगा, a dot a square, this into this minus 2a, then minus 3 is equal to 0. So अब बताओ ये क्या फिजिक्स का सवाल है? टेल मी, इज दिस अ फिजिक्स प्रॉब्लम? You just have to solve this ना, maths only, right? पढ़ने की क्वेश्चन है, you just have to find the value of a. Can you find the value of a? देखते ही पता चल जाएगा ना, can you find the value of a? Okay, चलो, now someone asked 48. So tell me, the distance x covered by a body moving in a straight line in time t is given by this. The acceleration of the body will vary as. सिंपल है ना, यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत कैसे हुआ? यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा ना, यस और नो? टेल मी, डोंट यू थिंक यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा 48 में? हाँ या ना, राइट, हाँ या ना? बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट एज दिस, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, 2 डी टी बाई डी टी प्लस 0, because it's a constant है। अब obviously you cannot differentiate x square with respect to t ना, right? So यहाँ पे तुमको chain rule लग जाएगा, got it?
Yes or no? अब समझ में आया सबको? Right? So it will be what? Dx squared by dx into dx by dt. And this is equal to what? This is equal to 2t plus 2. So ये क्या हो गया? This is 2x into dx by dt is equal to 2t plus 2. So dx by dt is, बताओ, 2 तो कट जाएगा, 1 by x into t plus 1. अब समझ में आया? अब समझ में आया तुमको? Yes or no? Right? सब क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? टेल मी. 48. राइट? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था किसका? टेल मी. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, है ना? राइट? और इसको यहाँ पे मत लाओ. राइट? ट्राई करो इसको इधर ना लाकर ऐसे ही रखो, इसी साइड रखो, बट एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, है ना? उसी साइड रख के एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो. कैन यू डू दैट? है ना? तो कौन सा रूल लग जाएगा? टेल मी. बिकॉज अगर तुम इस साइड कर देते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ जाएगा. यस और नो? है ना? जैसे इसको यहाँ पे अगर कर दिया तुमको क्वोशिएंट रूल करना पड़ जाएगा, बट इसको इधर ही रखो, इसको इधर ही रखो, यहाँ पे x रखो. राइट? देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो कौन सा रूल यूज होगा? बताओ. विच रूल? x into dx by dt. which rule you have to use? Product rule ना? हाँ या ना? Product rule. Agree? Tell me. Agree? Right? It will be what? dx by dt. ठीक है? राइट? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट विल बी स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? राइट? 1 हो जाएगा dx by dt into dx by dt, so it is dx by dt whole square. इसका प्रोडक्ट रूल लग के this is equal to what? dt by dt is 1. हाँ या ना? टेल मी. yes or no? everyone think about it. प्रोडक्ट रूल लगे ना, ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, सो यहाँ पे x हो गया, ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, देन दिस कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया, and dt by dt is 1. So you just have to find what? D square x by dt square is equal to what? Tell me. 1 minus dx by dt the whole square by x. Agree? हाँ या ना? Agree? Tell me. और dx by dt यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, dx by dt यहाँ से पुट कर दो, because you just have to do what? Just have to find the relation. क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Okay? Right. So you just have to put it, है ना? The answer would be, if you put it, the answer would be C. Okay? Right. So 48 अच्छा क्वेश्चन था. 48 is a good problem. अब तक 48 अच्छा क्वेश्चन था. Okay, Suktika, I'll explain again. So first of all, right, this is not the problem of physics, by the way. This is the problem of maths. ठीक है, right? है ना? तुमसे अगर नहीं बना तो तुमको मैथ्स में दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं है. ये डिफरेंशिएशन का सवाल है. Yes or no? Tell me. How many of you relate to this? That this problem is based on differentiation, not physics. Okay? Right. So first thing is, I will differentiate it. X square is equal to t squared plus 2t plus 3. I will differentiate it. ठीक है? Right? So if you differentiate it, you have to use chain rule, because x square differentiation t respect में नहीं होगा. Right? X के respect में होगा. So after using chain rule, it will be what? X, because x square differentiation with respect to x will be 2x into dx by dt using chain rule is equal to 2t plus 2. ये सबको समझ में आया? सुक्ति का ये समझ में आया? Tell me. ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? Right?
एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल से, है ना? ओके राइट, I guess this is clear, this step is clear. Okay, so 2 will get cancelled, right? 2 will get cancelled, है ना? 2 कट जाएगा. So x into dx by dt is equal to t plus 1. Now, if you differentiate this again, right? You have to use product rule, है ना? You have to use product rule. X constant, differentiate dx by dt, so it will be d square x by dt square. Yes or no? Yes or no? Plus, keep x as constant, sorry, keep dx by dt constant, differentiate dx by dt. So it will be dx by dt into dx by dt is equal to differentiation of t will be 1. So it will be what? X. Now this is a acceleration. This is acceleration. So I'll just write it as a plus this is what? Dx by dt a whole square is equal to 1. और यहां से मुझे dx by dt क्या मिला बताओ? यहां से मुझे dx by dt क्या मिला? t plus 1 by x. Yes or no? अब समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? So can I just put the value of dx by dt from here to here? Or can I just say that a is equal to 1 minus dx by dt whole square by x? Yes or no? Yes or no? Which is a is equal to, you don't have to find the whole value, you just have to find t x के term में क्या होगा. So think about it, 1 minus we got t plus 1 by x का whole square, right? By x, यहाँ से whole square आ गया, by x whole cube हो गया. So a is inversely proportional to 1 by x cube. क्लियर है ये चीज? टेल मी सुप्तिका, क्लियर हो गई ये चीज? Anyone have any doubt in this now again? Okay, right, so till 48 we are done. Now 49. Now don't you think that 49 is super easy? Tell me, don't you think that 49 is super easy? हम लोग को already पता है that if f1 is equal to f, f2 is equal to f, right, and f1 plus f2 is also equal to f, right, which means the angle is 120 degree. हाँ या ना? मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो क्या क्लास में मैंने करवाए, लाइक मैंने करवाए हैं, राइट? इसका right, because it is what, f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2, sorry, 2 f1 f2 cos theta, right? So this cos theta is equal to what? So it is f square plus f square. This should be minus f square, yes or no? This should be minus f square, right? Minus 2 f square into, no, it should be half ना. So minus half होने के लिए क्या होता है? Minus half होने के लिए क्या होता है? Tell me, right? If you solve now, if you solve also, you will get, right, that this should be half. ठीक है? Minus half. Okay? Right? F square is equal to f square plus f square plus 2f square cos theta. फॉर्मूले का सॉल्व करोगे तो it will be what? Minus half is equal to cos theta. So theta is equal to 120 degree. ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, मॉड्यूल में करवाया हुआ है. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन ये. ओके, राइट? 50 हो जाएगा. आई डोंट थिंक दैट 50 करना पड़ेगा. 50 हो जाएगा ना? नहीं होगा सर, क्योंकि सोलर कांस्टेंट समझ में ही नहीं आ रहा क्या है. अरे भाई समझना भी नहीं है, यूनिट दिया हुआ है. सुपर इजी क्वेश्चन. व्हाट आई टेल यू, टेल मी, व्हाट डिड आई टेल यू? दैट इफ यूनिट इज गिवन यू कैन फाइंड बाय, टेल मी, फाइंडिंग द यूनिट्स, राइट? केजी मीटर हो गया, सॉरी एम हो गया, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, पर सेकंड स्क्वायर, t2 - 2 हो गया. भाई कितना डिफिकल्ट था, कितना डिफिकल्ट था, राइट? कोई आंसर है? सर आंसर ही नहीं मैच कर रहा है सर.
बिकॉज ये किसका है, ये एनर्जी का है, दिस इज फॉर एनर्जी, राइट, है ना. बट क्वेश्चन इज एनर्जी रिसीव पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट, टेल मी पर यूनिट एरिया, यस और नो. एनर्जी का क्यों है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया हो गया, तो आंसर क्या हो गया बताओ, पर मिनट, पर मिनट, पर यूनिट एरिया पर मिनट, राइट. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर मिनट पावर 1 कितना होगी बताओ, दिस कैंसिल हो जाएगा, टी टू माइनस 2 एंड टी टू पावर 1, so टी टू माइनस 3, so the answer will be what, m l to power 0 टी टू माइनस 3, है ना. बस यही करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, राइट. now 51 is the basic definition, हाँ है ना, 51 is basic definition, yes or no. tell me 51 तो बेसिक डेफिनेशन ही है भाई. 51 तुमसे नहीं बना क्योंकि तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, as simple as that. 51 तुमसे नहीं बना क्योंकि तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है. What is the formula of this? 1 plus cos theta. Tell me what is formula of this? 1 plus cos 2 theta. Tell me 1 plus cos 2 theta कितना होता है? Everyone. What is 1 plus cos 2 theta? बताओ. 51 जिनसे नहीं बना ना उनको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज भी नहीं आते. As simple as that. As simple as that. Tell me. Everyone, tell me. Two cos square theta by 2, right? है ना? Yes or no? Tell me. हाँ या ना? Tell me. We know that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta by 2, right? Minus 1, right? So 1 plus cos 2 theta is equal to what? 2 cos square theta by 2. Okay? Right? Agree? Tell me. Agree? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. So obviously I can say that resultant would be what? Resultant is under root of now this 2 into 2 4 4 यहाँ पे दिया magnitude is p 4p square cos का थीटा by 2, तो रूट से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा 2p cos थीटा by 2. बताओ डिफिकल्ट था क्या? टेल मी वाज दिस डिफिकल्ट, टेल मी वाज दिस डिफिकल्ट, राइट ना. अगर तुमको बेसिक फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो होगा ही ना, राइट, है ना. ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगा है. ओके, नेक्स्ट 51 हो गया. अब 52. ना 52 माइट बी डिफिकल्ट. 52 तुम लोगों ने गलत किया होगा, छोड़ दिया होगा. क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया? लीस्ट काउंट क्या होता है बताओ, व्हाट इज द लीस्ट काउंट? मैंने समझाया था ना लीस्ट काउंट क्या होता है. व्हाट इज लीस्ट काउंट? मेन स्केल डिवीजन, राइट, है ना. अब मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन इज x and this vernier scale division is y, right? So least count is equal to, याद रखना ये मान लो कि ये तुमको नहीं आता तो ये छोड़ दो, राइट, ये नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है ना. So least count is equal to main scale division which is main scale division minus vernier scale division, ये होता है, ठीक है, राइट. So it's fine, ये नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, है ना.
तो इस ये जब हम लोग 1 ईयर कैलकुलेट, एक्चुअली आई लेफ्ट इट फॉर स्कूल, ठीक है, बिकॉज स्कूल में तुम लोग को ये सब करवा दिया जाता होगा, ठीक है, बट एनीवेज इसको तुम छोड़ दो, ये नहीं बना होगा, ये नहीं बना होगा ना। 53 नहीं बना होगा, कंफ्यूज हो गए होगे, बिकॉज वेक्टर्स, गाइस, why you have to worry about vectors, tell me, इतना करने के बावजूद। Now, force of magnitude 6 Newton, 6 Newton, root 72 Newton, right? Find the resultant. भाई कितना easy है। Which method you have to use? Raise your hand. Which method you have to use? बताओ कौन सा method use करना चाहोगे तुम? Tell me. I'll tell you. I can solve in two line. Sir, I will use which method? Sir, I will use, right? ठीक है. Diagonal of cuboid, yes. Or I just tried this. Sir, the vector which I'm having is nothing but 6 I cap plus 6 j cap plus root 72 k cap. As simple as that. As simple as that. And the magnitude is root of 6 square plus 6 square plus root 72 whole square. Simple. और कुछ नहीं करना, यही है सर, आंसर यही है सर। हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? बताओ दो लाइन में बना या नहीं बना? That is the main of that is the resultant, na? Agree? Tell me yes or no? Right? 36 plus 36 plus 72. So 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12. The answer is D. बन गया? Yes, correct Sampada. Okay. Now 54. 54 जैसे सवाल बहुत आएंगे, सबसे नीचे में सवाल काफी आएंगे अब सिलेबस में। Tell me. Each of these, right? Each of these contain two statements. ठीक है? A physical quantity cannot be called as a vector if magnitude is 0. Tell me yes or no. जल्दी जल्दी को, जल्दी जल्दी. Yes or no. Is this correct or wrong? Sir. Yes, it can. Null vector होता है. What is null vector then? Tell me. Null vector क्या होता है? होता है ना भाई, null vector नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Right? Vector is 0. है ना? Zero vector, right? Null vector. So the answer is what? Tell me. Answer is what? D हो गया ना, बिकॉज ये फॉल्स है, खत्म, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन जनरली काफी गलत करते हैं लोग, राइट, ठीक है। देखो नाउ 55 जल्दी जल्दी कर देंगे। 55 C is equal to A cross B, D is equal to B cross A. What is the angle between C and D? Common sense, sir, common sense. C is perpendicular to A, C is perpendicular to B. हाँ या ना? हाँ या ना? Right? Okay, and we know that D vector is equal to minus of A cross B vector. Yes or no? हाँ या ना? Sir, B cross A is minus A cross B. Ab we know that C vector is equal to minus of D vector. So obviously the angle is 180 degree. Done. Done, 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 done. Easy, super easy. So don't you think that sir 55 में से, sorry 25 में से 20 questions तो सर आराम से बन जाना चाहिए था, हाँ या ना? Tell me. Physics. I'm just talking about physics. मैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा। How many of you feel कि 20 क्वेश्चंस तो बन जाना चाहिए था अगर ढंग से मॉड्यूल सॉल्व किया है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ढंग से मॉड्यूल सॉल्व किया है, ढंग से पीपीपी सॉल्व किया है, सो 20 क्वेश्चंस बन जाने चाहिए थे। ओके, मतलब फिजिक्स अलोन वुड हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। अकेले फिजिक्स में 80 मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए थे, राइट? That is why I keep on saying focus on the mistakes, focus on the mistakes. Okay, now इसमें शायद आंसर कोई गलत था, इसमें कुछ आंसर गलत था, राइट? What is delta t by t? What is delta t by t? डायरेक्टली निकालें, डायरेक्टली। What is delta t by t? हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, इसलिए delta t by t is, tell me, half delta l by l plus half delta g by g. Yes or no? हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है इसका, इसीलिए। Tell me, निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है?
right? Yes. Okay. Yes. Now here, error 1, error 2, error 3 denotes the percentage in delta G by G. है ना? Length of pendulum is given, number of oscillations is given, right? And total number of oscillations is given, time period is given. Now this question was good, right? This question was good, right? So ये गलत कर दिया तुमने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Even if you make this mistake, it is fine. ना यहाँ पे थोड़ा सोचना है, सोचो एक बार. Delta T by T is equal to half delta L by L plus half delta G by G, right? But यहाँ पे एरर तुमको निकालना किसमें है? Tell me, यहाँ पे एरर निकालना किसमें है? T में कि G में? Tell me. Tell me. T में कि G में? बताइए. Tell me guys. You have to find the error in T or G. G na, right? So is it correct to use this formula? Is this correct to use this formula? No, I have told you, right? ये मैंने खुद बताया था. Sir, अगर G में निकालना होगा तो मुझे इसको G के टर्म्स में डालना होगा, which is what? T square is equal to 4 pi square L by G. So G will be 4 pi square L by T square. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? Okay. Now, then what is delta G by G? Delta G by G is equal to what? Tell me, delta L by L plus 2 delta T by T. Agree? Raise a hand. Agree? Yes or no? Agree यहाँ पे? Right? But here's one more parameter. एक और parameter है. Tell me, what is that parameter? Everyone. एक और variable होगा. वो कौन सा variable है? Tell me. Number of oscillations ना? And number of oscillations will change what? Tell me. Number of oscillations किसको change करेगा? Time को change करेगा कि length को change करेगा? It should be with time or length. Tell me. It should be this with time now. So it will be n into t, n into t, so whole square. So if you see the number of oscillation, because t dash will be n into t, and t dash will be n into t, so it will be n square t square. So it will be what? 2 delta n by n. Clear हो गया ये चीज? हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो. Because this was the good problem, right? अब बताओ. यहाँ पे right, delta L by L, E1, right, E2, E3. Least count is given for length. Delta L is given. Delta L for this is also given. Ayana. Delta L, delta T given. Delta L, delta T given. Right? Okay. Ayana. So can you find the value of delta G by G in each cases? Tell me. Raise your hand and tell me. Can you find delta G by G in each cases? Ayana. Right? Because delta n by n यहाँ पे हम लोगों ने 0 मान लिया, नहीं दिया ना? Right? Error in numbers, right? We will consider as 0. Yes or no? Error in numbers will consider as 0, right? So you just have to find the value delta L by L and delta T by T. Can you do that? Can you do that? Tell me. Right? Because यहाँ पे देखो delta n नहीं दिया ना, delta n नहीं दिया, तो delta n नहीं दिया है, so I will assume कि there is no error, है ना? So it is 0, right? Delta L by L 0.1 by 64 E1 के लिए 2 delta T by T, है ना? Right? 2 delta T by T, so it will be what? Total time is this only, na? 128. Delta T is given 0.1. So E1 निकल जाएगा, E2 निकल जाएगा, E3 निकल जाएगा. Can you do that? हो गया ये? So निकालने का पता चला ना कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है कि नहीं? Done? This is done.
Okay, anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? No? Chalo. 54. An elevator ascends with an upward acceleration of 2 meter per second squared, right? At the instant, its upward speed is 2.5 meter per second. A loose bolt is dropped from the ceiling of the elevator 3 meter above the floor. If G is equal to this, then अब खुद सोचो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है. Elevator ascends, so U is given, which is 2 meter per second. At the instant, its upward speed is 2.5 meter per second. V is equal to 2.5 meter per second, right? A loose bolt is dropped from the ceiling of the elevator, right? Ceiling of the elevator, है ना? 3 meter above the floor, right? 3 meter. G is given. Then, now tell me, यहाँ पे कौन सा concept use हुआ है? Tell me, which concept you have to use? Everyone, tell me, which concept you have to use? हाँ या ना, बताओ, कौन सा concept use हुआ है? Don't you think यहाँ पे relative motion concept use होगा? Yes or no? Raise your hand. Relative motion concept use होगा? Yes or no? Right? Concept देखेंगे. अब बताओ, what is the initial velocity, right? If I talk about the initial velocity of bolt, right? Your question should be, sir, with respect to what? है ना? So I will consider with respect to, tell me, elevator, with respect to the floor of elevator. Tell me. So what is the relative velocity of bolt with respect to floor of elevator? Tell me everyone, message. क्या लगता है, क्या होना चाहिए? 0. Very good, Suhan, है ना? Because, right, the velocity of bolt will be same as the velocity of elevator, right? 2.5 रहेगा तो 0 हो जाएगा. Okay. Now, what is the relative velocity? What is the relative acceleration of bolt? Tell me, what is the relative acceleration of bolt? बताओ. अगर तुम को relative concept clear है ना, तो it is easy. खुद सोचो ना. Everyone, think about it. ये जो है, right, this is per second square, by the way, this is acceleration. ये नीचे गिर रहा है 10 meter per second square से, right? और ये जो है, ये ऊपर जा रहा है 2 meter per second square से, सही, acceleration से. So relative कितना है? नहीं नहीं, यहाँ सुहान यही तो दिक्कत है ना. ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है, तो acceleration क्या हो जाएगा? Tell me. Acceleration will add up ना, सुहान? Yes or no? हाँ या ना? Tell me. Relative acceleration will add up ना, opposite direction है तो. Right? So relative acceleration is equal to what? 12 meter per second square. Right? Distance covered कितना करना है? S is equal to 3. Right? U is equal to 0. निकल जाएगा टाइम, निकल जाएगा सब कुछ. 57 हो गया. हाँ या ना? Raise your hand. हाँ या ना? निकल जाए सब कुछ. Okay, chalo. So this is done. 57 is done. Now, last few questions. 58. I guess 58 is super easy. हाँ या ना? 58 is super easy. The displacement time graph is shown like this. The instantaneous value of the particle is negative at which point? Again, यहाँ पे positive है, slope 0 है. यहाँ negative है, यहाँ positive. The answer is E ना. I guess this is super easy, right? Easy. Yes. It was easy. Now, 59. Three vectors A, B, and C are such that A plus C is equal to B, right? If the vector C is perpendicular to vector A and the magnitude of C is equal to 3 by 4 times that of A, what would be the angle between A and B? ये तो हो जाएगा ना, right? Again, not that easy, but हो जाएगा. Okay, C is perpendicular to A. C is perpendicular to A.
and magnitude of C is equal to 3 by 4 times magnitude of A. Okay, so think about it. When you talk about B, everyone, when you talk about B, it is what? Magnitude of B is equal to what? Under root of magnitude of A plus magnitude of C, which is 3 by 4 times magnitude of A plus 2 into, tell me, A into C, no, but this is 0. So it will be 0. Agree. A and B, A and, sorry, C is perpendicular. So this will be 0. Agree. Hi, Anna. Tell me. Hi, Anna. Right? So magnitude of B will be what? Magnitude of B will be A square plus 3 by 4 A square. So 1 plus 9 by 16. 25 by 4. So it is 5 by 4. Hi, Anna. Raise your hand. Clear. Who are your concept? So can you find the angle between A and B now? Think about it. Can you find the angle between A and B now? सर कैसे निकालेंगे सर? Magnitude of A पता है, magnitude of B पता है, और क्या पता है? Tell me, और क्या पता है? Dot product use कर सकते हैं? Tell me, can we use dot product? हाँ या ना? Forget about dot product, right? Common sense use कर सकते हैं? Tell me, can we use common sense? Right? Yes, sir. Common sense use करेंगे sir. This is A, this is C, then this is B ना? Common sense sir, right? क्यों सोचेंगे sir? Common sense दिया ना हम, right? So angle between A and B is this angle ना sir? This angle, right? हाँ या ना? Tell me. So what is this angle? What is tan theta? Tell me. Tan theta is magnitude of C by magnitude of A. Agree? और ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है. Yes or no? क्वेश्चन में ही दे दिया ना. 3 by 4. So आंसर क्या हो गया? Right? बताओ, सबको समझ में आ गया? इजी था ये. ओके, चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 60. Sum of two vectors A and B is at right angle to their differences. सिंपल है भाई, A plus B, right? है ना? Dot A minus B is equal to 0. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई sum और difference right angle पे, मतलब dot product 0 है, खत्म हो गया. This is the concept. I hope all of you know how to find dot product. A dot A is equal to what? Mod of A का whole square minus B dot B is mod of B का whole square is equal to 0. Answer क्या हो गया बताओ? What is answer? What is answer guys? Don't you think sir A हो गया answer? Mod of A is equal to mod of B. Very good Zain, very good. Clear है ना? So physics में हमारे सारे doubts clear.